हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके सामने एक वोकैबुलरी की लिस्ट लेके आई हूँ रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम टू बिगिन विद फर्स्ट वन इज not so good, which is cacophony. Cacophony is a harsh and unpleasant sound जो आपको आपके कानों को आवाज़ अच्छी नहीं लगती. It is usually used to describe a situation where there's a lot of noise and disagreement, right? बहुत आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है. मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंस से समझाती हूँ. The cacophony of horns, sirens and construction made it very hard to concentrate. मेरी concentration ही नहीं बनी. Second, the debate suddenly turned into the cacophony of shouting and disagreements. इसका opposite होता है harmony. Harmony, cacophony. Harmony होता है peaceful, शांति. Second one is vibrant. It is full of energy and life. Vibrance थी बहुत पार्टी में. For example, the vibrant colors of painting suddenly caught my eye. मेरी नजर अटक गई उस पे. Caught my eye. ये this is another phrase, you can learn it. And the vibrance of party was really so good, too good. Third is tranquil. Tranquil is peace and quiet. You can't relate it with harmony. Tranquility and harmony are different things. Harmony कि शांत है, सब कुछ शांत है. And tranquil जो आपके मन को शांति दे. Tranquility. So मैं example sentence आपको बताती हूँ. The tranquility of park calmed me down. मुझे शांति मिली पार्क में बैठ के. That kind of peace it is. The tranquility you are seeking is nowhere found in city life. Fourth is echo. Usually लोग इसको echo बोलते हैं. It is not echo, it is echo. ये repeated sound होती है that bounces back. आपने hills पे देखा होगा, लोग try कर रहे होते हैं, नाम बोल रहे हैं कुछ और वो वापस आ रहा है. That is echo. हम फोन करते हैं, उसमें भी echoing होती है. Okay, your voice is echoing. What happened? Voice is echoing. तो वो वाला echo. So example, the echo in the cave was spooky. Spooky means scary. जो cave में echoing हो रही थी वो बहुत डरावनी थी, scary थी. Next is mutter, a very indistinct low sound. दूर से आती हुई एक बुदबुदाने की आवाज, बड़बड़ाना या बड़बड़ाना बोलते हैं जैसे हम लोग हिंदी में. तो आई कुड हियर यू मटरिंग देयर. मुझे पता है तुम वहां बड़बड़ा रहे थे. दैट इज मटर. नेक्स्ट इज बज. इट इज यूज नाउअडेज इन नंबर ऑफ सिचुएशंस. बज एक ऐसी हनी बी की आवाज से आया है. बजर जब बजता है, बजर बज गया, नाउ स्टॉप डूइंग वर्क, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उससे आया है. And that is used in so many situations. For example, in news also, buzz है कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, buzz है कि मूवी बहुत अच्छी है. बच्चे buzzing कर रहे हैं आसपास प्लेग्राउंड में. There are so many situations where you can use this word. It is a very low sound and it is continuous. तो मैं कुछ example sentence से clear करती हूँ कहाँ कहाँ use होता है. The buzz is that the new movie is entertaining. The buzz is that the new restaurant is amazing. The children were buzzing around in the playground. The buzz of the intercom interrupted my conversation. So this is how buzz is used. Also suggest me various other situations where these vocabulary words are used. Thank you so much and see you in the next video with another topic. Thank you. Bye-bye.